So hello everyone and welcome to Career Launcher. In today's class, we are going to discuss a very important topic, and that is Civil Disobedience Movement in Dandi March. And I hope you all are aware that why this is important, because there is one previous year question also they had asked, which is actually related with Civil Disobedience Movement. So of course, this becomes of course very important. They can again repeat that type of thing. So let us begin. Am I audible, visible? Everything is fine? If yes, then please write yes in the comments. Or I hope you all are aware that we are running this series of modern Indian history for the past 1 or 2 weeks, where I have discussed history topics. And the reason is very simple, because there have been questions from this topic, and that is why you should know. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, first you should know कि कहाँ से, अगर if you have missed the previous videos, then how to watch. So we have made a separate playlist for that. Okay. And I will try to ensure that all those contents related with history would be there in one place. Yes. Yes. Good afternoon, everyone. Welcome to the class. I think I'm audible, visible. Everything is fine. आवाज आ रही है? If yes, then please write yes. ठीक है. एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में कि वॉइस क्लियर है, slide is visible, everything is fine. Please write yes. ठीक है. तो and those who have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel. ठीक है. प्लेलिस्ट पे जाओगे. So we have made a separate playlist. ठीक है. तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में we have actually put all the history videos. ठीक है. एक दो और हिस्ट्री की वीडियोस को मैं इसमें इंसर्ट करवा दूंगा. ठीक है. तो इसमें we had discussed all those things है ना. तो the Gandhi Satyagraha movement I had discussed, Champaran Satyagraha and all. Then Rowlatt Satyagraha, then non-cooperation movement I discussed yesterday. ठीक है. Then of course in today's class is Civil Disobedience Movement. Then Government of India 1935 में मैंने पढ़ा रखा है. So all these things are actually here. Okay. Now I want a quick revision, but before that I want to show you the PYQs that were asked, because I need to convince also the students that yes, these topics are important for CLAT. देखो ये question आया है, nationalism in India and the contemporary world. So this topic is all about Civil Disobedience Movement, है ना. All those में फिक्की वगैरह का भी रोल डिस्कशन है, but if you see they are talking about Civil Disobedience Movement, Dandi March, Gandhi Ji Salt March, etc. It means you need to have a basic idea, background of these concepts to understand the passages easily. Similarly, you can see they had asked about Jallianwala Bagh massacre, है ना. इस पर तो मैंने क्लास ले लिया already. I've already taken a class. Then of course Constituent Assembly पर, है ना. That is what we had seen, that Dr. Ambedkar's address to the Constituent Assembly. So some of the things they are giving a sign that yes, in the recent years they are trying to ask some questions from history topics also. That is why we are covering these things. Okay. Now have a quick recap. Please tell me which was Gandhiji's first satyagraha in India. Please tell me fast. Gandhiji first satyagraha. मैं आपको याद कराते जा रहा हूँ. Second is first All India Satyagraha. फास्ट रिवीजन है, तो आप लोग जल्दी क्विक रिकैप बताते जाओ. एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप क्यों हुआ था, ये बताना है. यस, फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण 1917. वेरी गुड. फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह 1919, रॉलेट सत्याग्रह. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक हुआ था? 1920 से 22. व्हाट हैपेंड? चौरी चौरा इंसिडेंट. Very good. ठीक है. Okay. Yes, very good, very good. It's great that you all are watching it and you all are remembering it. ठीक है. तो बहुत अच्छा. I'm very happy that you all are responding. Okay. So let us begin with another important movement called the Civil Disobedience Movement. So please tell me when it was started. It was started in the year 1931, 32, 30, 1929. What is the right answer to this question? कब start हुआ था Civil Disobedience Movement? This is important, guys. Please, I'm waiting for the response. आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा 1930. Yes, Priyanshi Goyal, very good. Shreyas Reddy, Siddhi. The right answer is option C. 1930 में start हुआ था ना. ठीक है. So C is the right answer to this question. ठीक है.
Now the next question is, yes, Adrija Shivika, you are the right. C is the right answer. The Civil Disobedience Movement began with which of the following event? Very important. Star market. And these are the four options. Yes, very good. Yes, Priyanshi, Shivika, Harsh, Yashasri, Shreyash, Krishi, Sachdeva, Adrija, Siddhi, you all right. It's Dandi March. So option first kya hai? Fast unto death in the Yarwara Central Jail. This is related with Pune Pact, where we will discuss Pune Pact, September 1932. This is what it is, है ना? Against the separate electorates for depressed classes. So yeah, we'll discuss it. We'll be having a separate class for this. Gandhi's appeal for do and die, quit India movement. Tomorrow I will discuss 1942, August 1942. Gandhiji agreeing to attend the second roundtable conference. This we will discuss when I'll discuss Gandhi-Irwin Pact. AC class ka hai. In the last portion of this class, we will discuss. So here the Civil Disobedience Movement started by Dandi March by Gandhiji. So B is the right answer to this question. Okay? This is very, very important. Dandi March is very, very important. This is the beginning and the most important event in the Civil Disobedience Movement. Okay, so B is the right answer. The next is, in which session Indian National Congress talked about Swaraj for the first time? There is a reason why I'm asking it. Actually, क्या हुआ था कि last class में there were some confusions, है ना? So that is why, to clarify that, also I have given this question. Plus, in NCERT book, it was being talked about. In class 12 NCERT book, इसमें ये सब terms का discussion था, तो मैंने सोचा इसको भी clear कर दूं. In which Congress, ये मतलब Indian National Congress session, the term Swaraj was used for the first time. Not option C. यही तो मैं बताना चाह रहा था. Calcutta session 1906. इसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी. Even yesterday also I had discussed it. पूर्ण स्वराज resolution. ये सिर्फ normal स्वराज की बात हो रही है, ठीक है? So B is the right answer. तो this 1906 session जो हुआ था, श्री दादाभाई नारोजी इसमें थे, ठीक है? And this term was used. Swaraj at its 1906 session held in Calcutta, and where Dadabhai Naroji first used this term. ठीक है? That is what you should be knowing about. Okay, so the right answer is B is the right answer to this question. Now, why I'm discussing it? Because अगर आप NCERT के book उठाओगे, when you read class 12 NCERT book, chapter number 11. So Mahatma Gandhi and nationalist movement में initially it talks about non-cooperation movement, Rowlatt Satyagraha, etc., Rowlatt Act, etc. ये मैंने already पढ़ा दिया है. If you have not watched it, please go to our playlist section में जाओ, and here I have discussed ये Rowlatt Act, Gandhiji Satyagraha movement, non-cooperation. These three, actually, if you watch it, you will be able to understand the first half of this chapter. इस chapter का first half आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? This is class 12 NCERT book, and I think this is chapter 11. लिखा हुआ है chapter 11, ठीक है? So here I have discussed all these three, this one, and this one. So if you watch it, you will be able to understand. उसके बाद वाला जो हिस्सा है, Civil Disobedience Movement. This I am going to discuss today, which I am discussing today. Okay. So the second half of this chapter, it talks about this. The Salt Satyagraha case study. लिखा ना भाई, Dandi March को Salt Satyagraha कहते हैं. It talks about it कि 1928 में Simon Commission सब आते हैं India. So when Simon Commission comes to India, why actually this was actually being opposed in India? What was the reason? कोई बता सकता है? Simon Commission was a commission sent by British in India, है ना? To find out to suggest changes regarding constitutional governance in India. It was criticized because of this. यहीं पे आगे लिखा all white means there was no Indians, and that is why it was criticized, है ना? Simon Commission. Yes, very good. Yes, Priyanshi Goel, Krishi Sachdeva, Shreyas, you are right. हाँ, Simon go back का नारा दिया गया था. Since you are coming to India to research about how the governance should happen, why you are not listening to Indians? You should have at least one Indian. एक आध तो Indians तो रख लो, है ना? So that is why it was being opposed, etc. है ना? December 1928 प्रकार की बात है. उसके बाद क्या होता है? Here it is actually. This is Lahore session being talked about in this chapter, which says that December 1929 session, है ना? Pune Swaraj resolution and all. So that is why I am starting from here.
तो डांडी मार्च से पहले, just before Dandi March, this is what we are discussing. So let us discuss about the Lahore session of the Indian National Congress 1929, December 1929. Who was the president of Lahore session? Was it 7 or 8? 7 or 8 थे, आप चेक कर लेना, शायद 7 8 थे. Please check the numbers, how many members were there. क्वेश्चन ये पूछा आता है कि साइमन कमीशन व्हाई इट वाज अपोज्ड, बिकॉज़ देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है. ठीक है. फिर लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिसंबर 1929. हु वाज द प्रेसिडेंट? Yes, Jawaharlal Nehru. And do you know today is something? Today is 27th May, है ना? And there is something related with Jawaharlal Nehru today. कोई बता सकता है? So the right answer is Jawaharlal Nehru. If you have read today's news anywhere, I'm sure you must have come across it. There is something related with Jawaharlal Nehru today, 27th May. कोई बता सकता है? Anyone? 27th May 1964 is the date on which he died. Death anniversary, right? हाँ, ठीक है. Yes, Krishi Sachdeva, Priyachi, both right. हाँ. So आज ही ये बात हो रही थी हर जगह, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी पूछ ही लेता हूँ. Okay, so 27th May 1964 he actually died. So the right answer is C is the right answer to this question. The Indian National Congress session 1929 happened on the bank of which river? ये भी पूछा जाता है. इस तरह क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं. So basically it means that they are asking that whether you know or not that since here 1929 session was Lahore session, and where on which river you will find this. So कभी कभी ऐसे पूछते हैं. I have seen sometimes. It happened on the bank of which river? Let me see. Yes, Yashasri Desai, Priyanshi Goyal, you both right. Ravi river. ठीक है. Please the right answer. ठीक है. तो अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज की बात करोगे तो देखो होता क्या, पहले मैं बताता हूँ. पहले लोकेशन दिखाता हूँ. देखो ये लाहौर दिख रहा हो, यहाँ पर रावी रिवर जाती है. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आगे जाओगे तो एक सिटी हड़प्पा, which was the first site to be discovered of Indus Valley civilization. Okay, so that is also on Ravi river. ये भी पता होना चाहिए. I have taken a class on Indus Valley civilization also. सर पाकिस्तान में झेलम नहीं जाती, क्यों नहीं जाएगी? झेलम goes like this. This is झेलम, this is चेनाब. Indus Valley civilization बताया ना, ये इंडस है. Okay, this is झेलम, something like this. ये ऐसे चेनाब ऐसे जाती है, चेनाब हो गया, ऐसे रावी जा रही है. अब ब्यास जो है ना, सतलज यहाँ से आ रही है, तो ब्यास जो है सतलज मिल जाती है, फिर ऐसे गई, फिर ये सब आपस में मिली और फिर यहाँ से मिल गई, फिर जाके यहाँ मिलती है. इसको पंजनाद रिवर कहते हैं. फिर ये यहाँ से जाके कराची में गिरती है, ये इंडस. ये भी पूछा हुआ है एलेट में क्वेश्चन, कहाँ पे गिरती है? तो कराची. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. खैर, so we're talking about this. तो अब हम लोग बात क्या कर रहे थे? देखो हुआ ये था कि I have earlier in the earlier classes also I had told you that generally speaking the Congress session used to happen in December every year. ठीक है, तो दिसंबर में सेशन हुआ, लाहौर सेशन. The president was Jawaharlal Nehru. What it was decided that next month, 26 January 1930, they will celebrate what? Purn Swaraj Divas. Purn Swaraj Divas. Please be careful. This is very, very, very important. Or what we call it in English as Total Independence Day, Complete Independence Day, Complete Independence Day. This was primarily symbolic in nature, Complete Independence Day, because of course we did not get independence on this day, but it was symbolic in nature. Purn Swaraj resolution was passed here. So the resolution was passed that next month on 26 January 1930 we will celebrate Complete Independence Day or Purn Swaraj Divas. Okay, is it clear? And this is the very reason why I'm sure you must have seen that even if it is written 26 November 1949, this is the date which is mentioned in the preamble, also known as Constitution Day. Earlier it was called as Law Day. It is being celebrated. Now it is being celebrated as Constitution Day. So 26 November 1949, the Constitution was ready. Yes, but still we waited for 2 months.
till 26 January 1950 to come up with first Republic Day or to fully enforce the Constitution. And the reason was to match this day with the Pon Swaraj Day. Is it clear? So if someone will ask you in future, why do we celebrate Republic Day on 26 January, you will say this is the day on which the Constitution fully came into force. So then the question that can be asked, it was already made on 26 November 1949. Then why did the people wait for 2 months? 2 महीना क्यों रुके? क्या खास हो गया? जब यहाँ बन ही गया था सब कुछ, तो लॉन्च कर देते उसी दिन, है ना? But they waited. Like some provisions were became enforceable on 26 November only, but full Constitution came into force on 26 January 1950, just to remember the date of 26 January 1930. Okay, so 20 साल बाद, you got it? Pon Swaraj resolution. That is why it is very important. ठीक है, इसीलिए मैं इसको जोर देके बता रहा हूँ, because से questions आते हैं. Pon Swaraj दिवस resolution है ना? So declaration of Pon Swaraj was a resolution passed in 1930, है ना? About this and all, है ना? Flag December 1929, Ravi River, है ना? Lahore. 26 January they celebrated as Independence Day, है ना? और Pon Swaraj दिवस. Okay, ये mentioned भी NCERT book में. That is what I'm discussing. मैं दिखा देता हूँ. This is what exactly is mentioned in the NCERT book. वही class 12 के chapter 11, है ना? That is what you can see it here mentioned. ठीक है? Now after this is incident of 26 January 1930. उसके कुछ दिन बाद, later on we are having March, April, यानी 2 महीने बाद we are having that Dandi March, the same year. ठीक है? इसलिए मैं उसको connect कर रहा था. Dandi March को I was connecting with this topic because this is how it is mentioned in NCERT book. तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी भी होगा. ठीक है? है ना? उसके बाद बात है Independence Day. After the Independence Day is over, then we talk about Dandi March and all. है ना? Now let us move on to this. How many demands were put by Gandhi ji before the start of Dandi March? So Gandhi ji ने Viceroy को, Lord Irwin I think was the Viceroy, he wrote a letter putting some demand कि अगर आप ये demand मानो तो ठीक है, नहीं तो we will start a new movement. So Gandhi ji sent a letter to the Viceroy asking for some demands. If you accept it, it is fine. If not, then we will start a new movement. Yes, 11 demands. This is the right answer. And these are the 11 demands. And I hope it is difficult to remember all 11, but popular ones आपको पता होना चाहिए. जैसे ये, eliminate the government's monopoly on salt and abolish the salt tax. देखो 11 topics में से main जो मुद्दा बनाया गांधी जी ने, इसको बनाया, salt सत्याग्रह. Why? Because salt is something which is taken by all people, whether rich, poor, etc., and mostly more or less equally. ऐसा नहीं होता नहीं कि अमीर आदमी ज्यादा नमक खाएगा, गरीब आदमी कम खाएगा, और ऐसा तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट रफली ऐसी चीज है. इट इज एन इक्वलाइजिंग फैक्टर, है ना? All rich, poor will take, है ना? So that is one thing which can have emotional idea also, connotation, and all people will support it irrespective of religion, race, caste, gender, etc. है ना? फिर और भी बहुत सारी चीजें, release all political prisoners except etc. Indian press. इतना नहीं याद रख सकते हो, I know, but this one is important. So गांधी जी ने इसी को मेन मुद्दा बनाया. This was the main thing गांधी जी took because he knew that yes, this is the thing that will give me the maximum support. So finally उन्होंने सुना नहीं, ठीक है ना? He gave British time, कुछ वक्त वगैरह दिया कि आप इतना टाइम दे रहा हूँ. देखो after the Pon Swaraj resolution we are talking about this, है ना? So he gave some time कि you have to accept these demands. If you will not listen, then I will start a new movement. तो इन्होंने डिमांड दिया, 11 मार्च 1930 तक टाइम दिया था गांधी जी ने. So the Viceroy did not pay heed to this. ठीक है, Viceroy ने ध्यान ही नहीं दिया कि आप मानो, हम तो जो भी डिमांड मांगा तो Viceroy ने इग्नोर कर दिया. So गांधी जी ने कहा कि ठीक है, I will start. Okay, so the next day from 12th March, Gandhi ji started Dandi March. And what is Dandi March? 11th March तक टाइम दिया था, 11th March 1930. नहीं सुना, कोई बात नहीं. 12th March I will start my movement. What is the right answer? Yes, the right answer is option B. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, तो साबरमती, ऐसे ऑप्शंस देते हैं कभी-कभी. कभी-कभी टेढ़ा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो. So it started from Dandi March, which actually started from Sabarmati Ashram. I have discussed earlier also that Gandhi ji had established Sabarmati Ashram in Ahmedabad, Gujarat, है ना? So Sabarmati से Dandi walk किए पैदल. So let me show where exactly it is in the Gujarat.
ये गुजरात स्टेट है, ठीक है। एंड नीचे आते हैं, हाँ देखो जूम कर दिया मैंने, ये वाला है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में है ना साबरमती आश्रम, यहाँ पे दांडी है। अब आप बताओ, कैन एनीवन टेल मी कि गांधी जी ने वॉक किया दांडी क्यों गए, कहीं और चले जाते? हाँ, ही वाज बोर्न इन पोरबंदर, गांधी जी पैदा यहाँ हुए। सो गांधी जी यहाँ वॉक करके यहाँ दांडी क्यों गए? ही कुड हैव गॉन टू राजकोट चले जाते, महसाना चले जाते, पालनपुर चले जाते, भरूच चले जाते। व्हाई डिड ही गो स्पेसिफिकली टू दांडी? व्हाट इज सो स्पेशल? थोड़ा सा IQ लगाओगे आंसर कर दोगे। Why I'm saying it? Because I want you all to think also in the exam. हाँ, the main topic was salt. तो नमक जो है तो समुद्री तट पे ही बनेगा ना। अब नियरेस्ट देखो, अगर पोरबंदर ही जाओगे तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना। तो नमक तो यहाँ बनता है ना। Yes, you need a coastal region because that is where the place where you will find salt, है ना, है ना। तो हुआ क्या कि गांधी जी वॉक, तो देखो ये 2 साल पहले 3 साल पहले आर्टिकल भी आया था, ग्रेट दांडी मार्च एंड TS, ठीक है। तो गांधी जी मूव्ड, है ना। 12th मार्च को मैंने बताया कि 11th मार्च तक गांधी जी गेव द टाइम। सो नेक्स्ट डे 12th मार्च 1930 गांधी जी मूव, है ना। और 6 अप्रैल टाइम लगा बिकॉज 24 डे, और आई थिंक 240 माइल्स था, यानी 387 किलोमीटर। 240 माइल्स यानी 1 माइल इज एक्चुअली 1.6 किलोमीटर, ठीक है। सो एक दिन में 1 मील चलते थे, है ना, है ना। 24 दिन लगा ना, तो ऑफ कोर्स एक दिन में, सॉरी एक दिन में 10 मील, सॉरी। So one day they used to travel 10 miles, which is 16 kilometer, ठीक है। So of course आज के जमाने में लोग 16 किलोमीटर एक दिन में नहीं चल पाएंगे, but of course, so at that time people used to walk, and he got support from 78 of his followers, है ना। साबरमती आश्रम टू दांडी, उस टाइम पर दांडी को नवसारी कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हाँ ना, which was called as नवसारी because maybe they can ask। अब हुआ क्या, जब गांधी जी यहाँ पहुंचे तो गांधी जी का मेन सिंबल क्या था? He wanted to break the salt law, है ना, कि आपने जो टैक्स लगा रखा उसको हमको तोड़ना है सिंबॉलिकली। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कैसे किया जाएगा? नॉन वायलेंट वे में। सो व्हाट गांधी जी डिड, आप देखो यही फोटो है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ बिकॉज लोग समझते हैं, देखो ये हाथ में इनकी नमक कैसे उठा के हाथ में ले रहे हैं बस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। दिस इज प्राइमरीली सिंबॉलिक इन नेचर, है ना, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट दांडी, ठीक है ना। महात्मा गांधी एट दांडी बीच 6 अप्रैल 1930 जब पहुंच गए वो, व्हेन ही रीच्ड, ओके, एंड देयर अदर फॉलोअर्स। तो वो मतलब एक सिंबॉलिक नेचर था कि मैंने हाथ में ले लिया और नमक हाथ में ले लिया, एंड आई एम वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ बिकॉज़ द ब्रिटिश हैव पुट टैक्सेस ऑन सॉल्ट आल्सो, ठीक है। इज इट क्लियर? इज दिस कांसेप्ट क्लियर? ये लिखा ना है, सॉल्ट लॉज एट 8:30 am 6 March 1930, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग, यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। Yes. Okay, fine. Now the next question is this was actually recently asked in some government exam. I was just seeing some PYQs and all of different exam में देखते रहता हूँ, तो I saw this question. So I just wanted to incorporate here, maybe शायद आपके पास भी आ जाए. Sedition has become my religion. This statement was given by Gandhi ji during which movement? Non-cooperation, Dandi March, Quit India, चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि अभी तो आप आंसर कर दोगे कि we are talking about Dandi March, तो ये आंसर होगा, हाँ ठीक है। But yes, in examination hall, if you have not read it, it becomes difficult. So just remember it. B is the right answer. Maybe अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आया इस तरह का, तो आप याद रखिएगा। So that is what, because he violated this, है ना, breaking the salt law, etc. and all. That is what you should know. So B is the right answer, है ना। The next is चौकीदारी tax was violated in which state during civil disobedience movement? वही दांडी मार्च के टाइम पर। तो हुआ क्या कि जब गांधी जी ने ऐसा किया ना, so पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लोग जो है गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर के दे डिड मेनी थिंग्स इन द मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो जैसे इस स्टेट में क्या हुआ कि यहाँ चौकीदारी टैक्स बहुत ज्यादा था, सो पीपल स्टार्टेड वायलेटिंग दैट कि चलो वी विल नॉट पे दिस टैक्स। व्हिच स्टेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? प्राइमरीली इट इज इन बिहार। अगर कहीं पे वेस्ट बंगाल लिखा, अगर बंगाल लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चौकीदारी टैक्स was as part of civil disobedience movement, especially during salt satyagraha in 1930 in Bihar, where salt opposition was not feasible. तो हर जगह हर चीज feasible नहीं थी प्रोटेस्ट करना, तो यहाँ पर चौकीदारी टैक्स बहुत हाई था, so people opposed. They said कि we will not pay चौकीदारी टैक्स। और विलेज वॉचमैन या विलेज हेडमैन को देना होता था। जस्ट हैव एन आइडिया, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली
I have told you when Gandhi ji did something in India, जैसे मान लीजिए गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट किया, पूरे इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है। ओके, विलेज हेडमैन को टैक्स देना होता था, इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर इट, ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं कि चौकीदारी टैक्स वाज वॉलेटेड इन व्हिच स्टेट, ठीक है। So in Peshawar, of course, देखो अब आपको, I hope you are aware, we are talking before 1947, so of course Pakistan and Bangladesh was the part of undivided India, ठीक है। तो यहाँ पर पेशावर है, okay. So in Peshawar, one of the Gandhiji's follower was Khan Abdul Ghaffar Khan. आपने इनका नाम सुना होगा, you must have heard. He is called as Frontier Gandhi. ऐसा पूछते हैं, who is called as Frontier Gandhi. He organized a group called as खुदाई खिदमतदार्स, और इनको रेड शर्ट्स भी कहते हैं ना, रेड शर्ट्स, related with Civil Disobedience Movement, ऐसा पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। So they also organized a satyagraha in Peshawar. Okay, बस इतना पता होना चाहिए, अब इससे डिटेल नहीं जाना, okay, हाँ। Similarly, Vedaranyam Salt March. अब क्या होता है? This is actually in Madras Presidency. Madras Presidency is actually modern day, आप समझ लो तमिलनाडु का रीजन, हाँ। So who was the leader? C Rajagopalachari. उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इसी तरह का वॉक ऑर्गेनाइज किया। कैसे, कहां से कहां तक? देखो, फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम, ओके। सो यहाँ पर देखो, ये तमिलनाडु है, सो तमिलनाडु में यहाँ पे तिरुचिरापल्ली, त्रिची आपने नाम सुना होगा, दैट्स अ वेरी फेमस कॉलेज, NIT त्रिची हियर, हाँ, कावेरी रिवर पर, और वेदारण्यम। सो यहाँ से वॉक करके गए लोग, लाइक दांडी मार्च उधर हुआ, तो यहाँ भी लोगों ने सपोर्ट में, गांधी जी की सपोर्ट में, दे वॉक टू द कोस्ट, कोस्ट पे जाएंगे ना, because here is what we will find salt and all, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ भी कि सी राजागोपालाचारी who later became the India's first governor general. I have taken a class on governor general, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ सी राजागोपालाचारी का डिस्कशन किया है, go and watch this class, इसको सर्च करना YouTube पर, you will get this video. I have discussed in detail about all the governor generals, viceroy of India, what are the prominent events that happened during his time, their time, ये important है, इसको देखना, okay। नाउ सिमिलरली के केलप्पन जो थे, उन्होंने केरला में ऐसा सेम वॉक ऑर्गेनाइज किया, ओके, जैसे है ना। और ये था कोझिकोड टू पय्यानूर इन मालाबार रीजन, तो ये कोझिकोड है जिसको आज कालीकट पहले कहते थे, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज कालीकट, यहाँ से लेके वॉक किए यहाँ तक, ये है पय्यानूर, ठीक है, पय्यानूर, जस्ट रिमेंबर इट, एंड दिस इज एक्चुअली इन केरला, ये पूरा केरला स्टेट है। बस लीडर का नाम हो सकता है पूछ ले कि who was the person, तो के केलप्पन organized this similar type of salt satyagraha in Kerala also, ठीक है। मालवारी क्या, मालवारी system of revenue farming, revenue collection एक ऋषि सचदेवा, that happens in Punjab region, that was there, so उसके लिए separate we'll have to take the class for land revenue settlement है। अच्छा, मद्रास प्रेसिडेंसी कितना बड़ा था ये पूछ रहे हो, this was something called as Madras Presidency, roughly आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा था इसमें, ठीक है। लेटर ऑन आंध्र प्रदेश became a separate state in 1956, I hope you are aware, है ना। खैर, so we are talking about this now। उसके बाद एक और होता है when गांधी जी actually had gone to दांडी, दांडी के बाद एक जगह धरसाना, धरसाना is the place where salt manufacturing happened, तो यहाँ भी गांधी जी जाते हैं जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, ठीक है, that is called as धरसाना रेड। तो मैंने आपको बताया कि गांधी जी एक्चुअली 6 अप्रैल 1930 को वायलेट करते हैं लॉ इन दांडी, है ना, सिंबॉलिकली दैट आई एम टेकिंग द सॉल्ट इन माय हैंड जस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड ऑल, है ना। तो ये दांडी में, है ना, आई डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। सो दांडी से 40 किलोमीटर दूर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज धरसाना, वहां जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जहां होता है वहां जाके दे गो एंड रेड, okay, that is called as Dharsana raid या Dharsana satyagraha, where Gandhi ji goes to there, है ना, and he had gone along with yes, these are the people, Abbas Tayyab ji, Sarojini Naidu, so these are the people who supported Gandhi ji during the Dharsana satyagraha, that is what you should be knowing, ठीक है। So Gandhi ji had gone along with his wife, so नाम कभी कभी कहीं के एग्जाम में आता है, just remember it, ठीक है। So Gandhi, देखो ये लिखा होगा 40 kilometers south of Dandi you will find this Dharsana also, okay। He was later arrested and sent to Pune jail etc, so that is what it had happened, ठीक है। ये सब गांधी जी लिखते भी बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ वहां प्रोटेस्ट करने के लिए etc, ठीक है। so these are the things that happen। खैर, now what happens is उसके बाद जो है ये चलता रहता है, मतलब the protest continues
till next year. So it started in 12th March 1930. इससे जो स्टार्ट होता है डांडी मार्च, है ना, से लेकर ऑलमोस्ट फॉर 1 year till March 1931 this civil disobedience movement continues. ठीक है, मार्च 1931 को स्टॉप हो जाता है. व्हाट इज द इवेंट दैट हैपेंड? किस वजह से स्टॉप हो सकता है, हो जाता है? व्हाट इज द इवेंट? मार्च 1931. इरविन पैक्ट. इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट. सो एक्चुअली क्या होता है, गांधी लॉर्ड इरविन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, या वाइसराय जो कह लो, है ना. 5 मार्च 1931 को दे आर हैविंग अ मीटिंग, है ना. सो उसमें कुछ अग्री किया था, दिस एंड्स मार्क्स द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, तो इसमें बहुत सारे अग्रीमेंट होता है. उसमें क्या होता है, देखो उसमें कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियंस को एग्री करना पड़ता है कि वी विल नॉट डू सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट वायलेशन एंड ऑल. ठीक है. And Congress agrees to participate. Gandhi ji agrees to participate in second round table conference in London. So देखो round table conference 3 हुआ था, 3 RTC, that is called as RTC. So round table conference 1 happened in 1930. Round table conference 2 happened in 1931. Round table conference 3 1932. इसमें गांधी जी एक कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, इसमें और इसमें गांधी जी नहीं पार्टिसिपेट करते, बट भीमराव अंबेडकर हैड पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3. ठीक है, तो बहुत सारे इंडियंस पार्टिसिपेट करते नहीं भी करते, बट 1931 इज द ओनली वन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर गांधी जी पार्टिसिपेटेड अलोंग विद कांग्रेस. फर्स्ट वाले में तो गांधी जी उस टाइम में जेल में थे ना, अरेस्ट हो गए थे एटसेट्रा एंड ऑल. सो इज इट क्लियर? सो गांधी जी अग्रीज टू जॉइन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन की जाके बात करते हैं, टॉक्स एंड ऑल. Withdrawal of all the ordinance issued by the colonial government imposing curbs on the activity of Congress. तो जो भी आपने लॉज बनाए थे सप्रेस करने के लिए, उसको विड्रॉ कीजिए, है ना. विड्रॉ ऑल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू सेवरल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, है ना, एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्ट मार्च. ओके, देखो इसमें की वर्ड यही है, यही दिस इज द मेन थिंग. आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस इज की. रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, वही जिसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था कि आप वो टैक्स हटा दीजिए. सो ब्रिटिश अग्रीड टू दैट. ओके, अग्रीड टर्म्स में जो है ये सारी चीज अगर आप पढ़ोगे, बस यही चीज है. व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस, कैन एनीवन टेल मी? फिर ये परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, रिस्टोर कन्फिस्केटेड, अगर जो सत्याग्रह में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनका आपने सामान छीना था, घर छीना था, उनको वापस कर दीजिए. परमिट फ्री लोकल कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लिफ्ट द बैनर ओवर कांग्रेस. तो ये सब अग्री कर गए थे. डिड ऑल 3 फेल? हाँ, मतलब फेल इन द सेंस कि बात ही बनी थी. एक्चुअली जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए ना, 1931 नवंबर दिसंबर में हुआ, तो टॉक्स फेल्ड एक्चुअली. ठीक है, फिर गांधी जी वापस आए. गांधी जी केम बैक एंड ट्राइड अ न्यू सीडीएम 2.0, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0. ओके, बट उस टाइम पर न्यू वॉइस आ गए थे, वेलिंगटन, एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसने सप्रेस कर दिया पूरा. ऐसा कहा जाता है कि 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 चला, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं था. ठीक है, सो टेक्निकली जो 1930 से 31 तक civil disobedience movement chala, that was the main civil disobedience movement, and it got stopped from by Gandhi Irwin Pact. So why I am highlighting this, ये कोई बताओ, what is so special? रिलीज, गांधी जी अग्रीड, गांधी जी और इरविन में बात हो गई कि जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए. बट इस बात पर बात नहीं हुई. इरविन कहा कि if somebody has been found guilty of violence then I will not leave. इसमें कुछ खास बात छुपी, इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं. Means the Gandhi ji tried to convince Irwin. There's one important event that happened. I am waiting for a few seconds so that if someone can answer in the comment. If someone has been found guilty of doing violence, then we will not allow to come out of the jail. लेकिन except those guilty of violence. Don't know. आपने भगत सिंह का नाम सुना है? Have you heard? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. It is linked with this. ठीक है, मैं बताता हूँ. गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस कह सकते हो, बट नो. देखो मैं होता क्या है, अब गौर से देखना. You have to be very careful. 5 March 1931, Gandhi Irwin Pact agreed.
ओके, ऐसे बताते हैं कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स वो भी मैं बता दूंगा, आई विल गिव बोथ द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट अग्रीड, ओके। नाउ उसके बाद क्या था, इसको अप्रूव किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। जनरली सेशन दिसंबर में होता था, लेकिन क्या हुआ कि इस बार 26 से 31 मार्च को हो गया। भाई बिकॉज आपको उसको अप्रूव भी तो करना है ना, दिसंबर तक थोड़ी वेट करोगे। वेयर कराची सेशन, सो इट वाज अप्रूव्ड, ठीक है। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची सेशन? सरदार पटेल, ठीक है, ओके, यस। अब देखो, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द प्रेसिडेंट 26 से 31 मार्च 1931। उसके बाद यहाँ जो है जैसे दिल्ली है, ये है कराची। So of course Pakistan was a part of India before 1947. I hope you are aware. तो जब गांधी जी कराची पहुंचते हैं, so गांधी जी was shown black flags also. Why? What happened? 26 से 31 March 1931 is the date of Karachi session. Why? What happened? 3 days before something happened, and hanging of actually 23rd March 1931. आप देखो, here it is. बस 3 दिन पहले इन लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। इन लाहौर कंस्पिरेसी केस इट इज सेड। एक तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, एक तो सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर था, उसके मर्डर के लिए चार्ज हुए थे भगत सिंह पर। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने एक माइल्ड या लो इंटेंसिटी बॉम्ब रखा था, दैट वाज द रीजन, है ना। हाँ, लोगों की ये बात थी कि 23 मार्च को ये हुआ, 3 दिन बाद 26 मार्च को कराची सेशन हुआ, 3 days लेटर, ओके। सो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड। एंड पीपल सेड कि जब 23rd मार्च को फांसी हुई और जो ये था, ये 5th मार्च को साइन हुआ था। इट मींस कि यहाँ पर आपने प्रेशर क्यों नहीं डाला? व्हाई डिडंट यू पुट द प्रेशर ऑन लॉर्ड इरविन टू अग्री टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड द अदर टू, ठीक है। तो लोगों ने ये कहा कि आपको नहीं मानना ही नहीं चाहिए था, साइन नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बार बार ये हाईलाइट कर रहा था, ये। एंड आई वाज आस्किंग कि कोई गेस कर सकता है कि नहीं, क्यों। तो इसमें है कि अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, वेदर इट इज सेड और नॉट। तो देखिए बहुत सारे लोग, जैसे इवन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, कुड गांधी हैव डन मोर टू सेव भगत सिंह? तो इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, गांधी जी कुड हैव डन। सम पीपल से कि नहीं, गांधी जी ट्राइड हिज बेस्ट बट हो नहीं पाया, मतलब ही कुड नॉट प्रेशराइज एनफ। तो उसमें अपना अपना आर्गुमेंट है, अपना अपना ओपिनियन है। आई एम नो वन टू कमेंट की वेदर ही वाज राइट और नॉट। तो जो मैं देख रहा था, है ना, जैसे mkgandhi.org की वेबसाइट पे जैसे he was greeted with hostile slogan and black flags while attending Karachi session. बता तो दिया डेट, when he was hanged 23rd March 1931 और 26 मार्च को कराची सेशन स्टार्ट्स, है ना। ओके, इज इट क्लियर, है ना। सो इसमें जो आई वेंट टू द वेबसाइट ऑफ mahatmagandhi.org, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि गांधी जी ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव लाइव्स ऑफ भगत सिंह एंड हिज कलीग टिल द लास्ट मोमेंट। The paper also discussed Gandhiji's focus that at least suspension हो जाए, कि commutation of death sentence and all. It is said, so there are different opinions, ठीक है। I'm no one to pass the opinion that whether Gandhiji had tried his best, but most of the historians say कि हाँ, he tried it, but he was not successful. Bottom line ये कि successful नहीं हो पाए, and because of which they were hanged, etc. So that is the thing about it. So I hope this is clear. Is this topic clear about civil disobedience movement and all? उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। I have told you round table conference 1 in London happens 1930. ये सब नवंबर दिसंबर में होती है सारी सेशन, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 1931 नवंबर दिसंबर इसी के आसपास होती है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 1932, ये भी वही नवंबर दिसंबर के आसपास होती है। तो भीमराव अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 एंड मेनी अदर्स, बहुत सारे और पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता था ना, सिर्फ नॉट ओनली कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड अदर्स वर आल्सो इनवाइटेड। गांधी जी ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन दिस, और वो भी क्यों? बिकॉज वो मार्च 1931 में एक्सेप्ट कर लिए थे। इन मार्च 1931 इन गांधी इरविन पैक्ट ही अग्रीड टू गो टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, इज इट क्लियर? So what happens is, so Gandhi ji went there, but यहाँ पर बात ही बनी, talks failed mostly on the issue of separate electorates, and that is why he came back and all. Why I'm discussing it mostly on the issue of separate electorates? तो देखो, मैं तो कल क्लास लूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट पर, which is of 1942, है ना, 1942 का इवेंट है।
बट उसके बाद मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में एक क्लास लूंगा, इसके बाद से स्टार्ट करूंगा, उसमें होगा 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, तो उसको इससे हम लोग लिंक करेंगे। ओके, tomorrow we'll be having a class on Quit India movement which happened in 1942. Is this concept clear? Remember places of national park, biosphere reserve, dog lover? I have made already a video on that. YouTube पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख लो, लाइव सेक्शन में जाकर के आप ऐसे सर्च करना नेशनल पार्क्स, पूरा टाइप करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करियर लॉन्चर, लॉ एंट्रेंस, ऐसे सर्च करना। आई हैव मेड अ वीडियो, इंपॉर्टेंट वंस, प्रोमिनेंट वंस मैंने ऑलरेडी बताया। मार्च और अप्रैल करंट अफेयर्स वाली क्लास, अच्छा, ओके ओके, थैंक्स फॉर एडवाइजिंग, मैं देखता हूँ, आई विल टॉक इन दिस रिकॉर्ड आल्सो, ठीक है। So we are ending this class here. I hope you would have enjoyed the session. और अगर आपने previous classes नहीं देखी है, so I would suggest please go on the playlist, है ना, और ये playlist में जाके ये क्लास ले लो, देख लो, ठीक है, playlist में जाओ, ये सारे हिस्ट्री के जितने भी क्लासेस हैं, खास करके यहाँ से देख लेना, गांधी जी सत्याग्रह, ये वाला, इसके बाद से, ठीक है, watch it. Okay, so thank you everyone, thanks for watching. Please press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.